Yes. Good morning, my students. It's actually afternoon now. It's 12, right? Okay. So I hope you're all doing well. We are going to start our today's class. So before starting the class, I'm going to launch the technical poll. Just let me know if I'm audible and visible or not. Okay. So I'll be launching the poll now. Just let me know if there are any technical glitches. Hello, Paramananda Pujari. How are you? Okay. So I hope I'm clear. Okay, so then I'll end the poll here. All right. So what we had been doing in the last class, we have completed some question and answers for Animal Kingdom. And today is the last session for the question solving answers for Animal Kingdom today. Okay. So in the next week, I will be solving a different unit, ka different chapter. Okay. Like morphology of flowering plants or anatomy I'll take. Okay. So today we're going to wrap up this Animal Kingdom. Clear? All right. All right. Okay. So I think all of you have joined. So whoever is joining, let them join. We're going to start the class now. Okay? Yes. Great. Right. So there's a first question on the screen. Okay. I hope you have read and come. Okay. I hope you have read and now you're attending the class. And I hope that all of you are going to answer it correctly. And I want everyone to be active in the chat box. If not, then at least keep your initiative with you and try to choose the correct one based on you, based on your philosophy and your mental conditions. Okay, आपने जैसे पढ़ा है जितना आपको याद है उसके हिसाब से. Now, which of the following possesses electric organs and belongs to class Chondrichthyes? Okay, so torpedo, hippocampus, trigon, and exochetus. I'm going to launch the poll now. Just let me know which one do you think as an answer. Yes, I want answers to be there in the YouTube also. Please write your choosing answer in the chat box. And for the Zoom guys, I have launched poll here. Please make sure. Yeah, very good. Very good, Dahood. Yes, apart from Dahood, what about Rajkot? Bhavnagar has not joined it. Okay. What about Rajkot? Okay. याद के साथ भावनगर ने ज्वाइन कर लिया. Very nice. Okay, okay. Great. Okay, so there has been a confusion then for the students. All right. So I'm ending the poll, my students. So we're going to understand the answer here. So if you open your NCERT and if you see in the class, okay, chondrichthyes, you're going to find two special kind of organisms. Okay, one is a torpedo and another one is trigon. ये दो आपको देखने को मिलेंगे in this class. Okay, in this class you will be seeing. But what do they have special? Like torpedo में क्या special है और trigon में क्या special है? That you need to know. Like I'll tell you, electric organs के बाजू bracket में दिया है torpedo. Okay, so torpedo is the answer for this question. Okay, so if you're wondering, ma'am, hippocampus and exochetus का क्या? Beta, these belongs to a different class. That is Osteichthyes. Okay, स्पेलिंग ही याद नहीं रहते क्या आपको याद रह जाते हैं? Okay, great. So these two belong to this class. Okay, whereas trigon and torpedo belongs to chondrichthyes. But yeah, trigon is the one which has a different function. Okay, which performs like a different one. It is a poison sting. Poison sting karta hai trigon. Whereas torpedo is the one which possesses the electrical organs. Okay, so यहाँ पे देख लो क्या है. Torpedo has a pair of electric organs formed from the modified nerves or muscle tissue. Muscle tissues. Can you see here? pair of electric organs. This is one and this is two. Left and right side. आपके पास दो electric organs हैं, left and right, and they are modified from nerve and muscle tissue, and that lie between the head and pectoral fin. Can you see? This is the pectoral fin. Okay, head would be somewhere here. All right. So इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा electrical organ.
Okay, this is about torpedo. And what is the need? Okay, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि हाँ भाई कोई पॉइजन स्टिंग कर रहा है, किसी के पास इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करने की कैपेबिलिटी है, बट व्हाट इज द रीजन फॉर दैट विल सी. दे गिव द पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ अबाउट 100 volts फॉर नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. तीनों के लिए, नेविगेट करने के लिए वेयर दे आर गोइंग और वेयर दे हैव टू गो, एंड कम्युनिकेट. ओके, जैसे अनदर स्टिंगरे है समझो, या कोई और एक ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ इनको कांटेक्ट में लाना है, दे आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्टिंग. सो फॉर दैट कम्युनिकेशन पर्पस एंड द डिफेंस पर्पस. ओके, सो आप लोग होते हैं ना, आपको मूड था, हाँ मैडम आज हमारा फिशिंग करने का मूड है, हम ओशन को गए, वी आर गोइंग टू फिश सम ग्रैब सम फिशेस. तो फिशिंग करते टाइम पे आपको हाथ में ये मिल गया, तो वो डिफेंस करेगा ना, इट हैज डिफेंस मैकेनिज्म. इट विल गिव यू अ पावरफुल शॉक of 100 volts. Okay, so be careful whenever you are around these fishes, that is torpedo. Okay, so answer for this question is torpedo beta. This is direct question, directly taken from NCERT. Okay. Bhavnagar, you have not connected to audio. You are just there, but you are not able to listen to me, I guess. Even Pragna also. Okay. So we'll move to the next question then. We'll move to the next question. All right, same question. Okay, same category, same question, but still I wanted to give you because these have been asked many times in the previous years. Okay, so which of the following possess poison sting and belongs to class Chondrichthyes? Okay, इनके पास poison sting है and ये कौन से class में belong करते हैं? Chondrichthyes. Now you have to answer me. Just now we saw this. Just now, like 2 seconds ago we saw this, but let me see. I'm going to launch the poll here. Very good. Very good, Rajkot. Rajkot is trying to be active. I'm happy. All right. Okay. So make sure that you answer in the poll also. I have launched the poll. Please make sure that you answer in the poll. Great. I have got my answer. I don't want to waste much time over here. So we're going to understand which is the answer. Okay. Dekho beta, here, if you see the fish, labio and clarias. Okay, labio and the clarias are those which belong to the labio and clarias. They belong to, again, the word which I don't know how to pronounce. Okay, Osteichthyes. I don't know, like, ये जो wordings होते हैं ना, I like botany के wordings. They are quite a cute kind of ones. But ये animal की पता नहीं, मुझे लगता है कि dangerous kind of words हैं. I feel like being a biology teacher, I don't know about you. Okay, so but एक बार आपको आदत होगी तो then it is easier for you. Okay, now this mixin is a hagfish. Okay, which belongs to Cyclostomata. So this is Cyclostomata. I'll write here. Cyclostomata. ये Cyclostomata को belong करता है hagfish, which is mixin. Labio and clarias belong to Osteichthyes. Okay, the remaining कौन बचा? Trigon बचा, and this is the one which belongs to Chondrichthyes. Okay, यहाँ पे मैंने 2 H लिख दिए. Right. So this is the one, and I have also told you जब हम लोगों ने टॉर्पीडो की बात कर रहे थे, ट्राइगॉन इज द वन विच हैज पॉइजन स्टिंग. अभी हम लोगों ने बात किया, एंड इफ यू आर अटेंटिव यू वुड हैव इजीली आंसर्ड दिस क्वेश्चन. यस, द होल एंड राजकोट. आप राजकोट, सॉरी राजपूत बोल रही हूँ मैं. यू हैव बीन अटेंटिव हियर. ओके, सो इट इज अ क्लास ऑफ जॉर्ड. Okay, it's not Javed, it's jawed. Okay, jaw. Okay, jawed fish having cartilaginous skeleton. Okay, cartilaginous skeleton है इनके पास, and the class includes very diverse group of fishes like sharks, skates, rays, and chimera. ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम बताने की कोशिश की है. ओके, these are shark. Can you see? It's coming right towards you. अगर जिस किसी ने भी एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आया है, उसका कान काटने के लिए मैं शार्क को भेज रही हूँ यहाँ से. ठीक है, and there is a ray. This is a stingray. Okay, this is a stingray. This is a skate. ये skate है, and this is ratfish. Okay, ratfish is one type of chimera only. ठीक है, यहाँ पे मैंने दिए हैं, देखो. Okay, this is the one type of chimera. This is one. Okay, ये सारे जो है ना बेटा, they act as a predators. Okay, ये ज्यादातर predators के टाइप में होते हैं chimera वाले. They attack on prey for their food.
ठीक है. So look at them. They look dangerous, right? They look really dangerous. Yeah. So answer for this question was very simple, which was that trigon. Okay. So in amphibians, respiration occurs through. Amphibians में किसके through respiration होती है? I want, without delay, answer for this. Jal se jal. I don't need delay here in this question. Very good. Very good, Dahod. What about Rajkot? Bhavnagar? Vishal? Please answer in the chat box. Okay. If you don't want to answer in the chat box, then I have to launch the poll. क्योंकि आप लोग बहुत shy feel कर रहे हो ना. Okay. Yes. You can choose your answer in the poll. Okay, great, great. I can see people are, choosing their answers. Beautiful, beautiful. All right. So इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे, तो ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है. इफ यू टेक आउट द एनसीईआरटी, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, देयर इट हैज गिवन डायरेक्टली इन amphibians. Okay, amphibians are who have the ability to live both in the aquatic conditions and also in the terrestrial land. Okay, दोनों जगह पे ये रह सकते हैं. And respiration occurs through gills, lungs and skin. So answer is all of these. ठीक है. ये सारे तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ देख लेते हैं हम लोग. The respiratory organs in amphibians are gills, lungs, buccopharyngeal membrane and the skin. देखो ये सारे ही आपको amphibians में देखने को मिलेंगे. Okay, so where do you find gills then? Okay, gills are only specific for the tadpoles and few other amphibians which possess gills that help them to breathe underwater. Okay, gills की कहाँ पे जरूरत पड़ती है बेटा? When these amphibians are underwater. Okay, when they are inside water, there they must and should need the gills. Okay, तो lungs का क्या बात है? Lungs are used in the, are seen in the adult frogs and most amphibians, there are lungs present. ठीक है. बहुत सारे amphibians में lungs होते हैं. They help in the breathe when they are in the terrestrial environment. See, मैंने बोला ना, amphibians are those which live both in the aquatic and terrestrial conditions. जब वो aquatic में है तो gills का use करते हैं, जब वो terrestrial condition में है तब वो lungs का use करते हैं. Okay. Now, few of the amphibians do not possess the lungs and they possess a moist skin which help them trap the moisture and the respiratory gases. Okay, sometimes they also breathe. Okay, they also exchange gases through skin. ठीक है. देखो कितना सारा मैकेनिज्म है इनके पास, है ना. And this skin will be always moist. Okay, to allow the trap of moisturization and the respiratory gases. Then the last one, this you might not have heard, but I wanted to add this here. Buccopharyngeal membrane. ओके, तो ये कहाँ पे होती है बेटा? इट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, दैट इज कॉल्ड एज बक्कोफैरिंजियल मेम्ब्रेन. ठीक है. उसका जो माउथ है ना बेटा, उसके माउथ के अंदर इनर लाइनिंग होती है विच ऑल्सो अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरमेंट. Okay, so totally you have seen 4 here. Okay, 4 in the amphibians: gills, lungs, skin and buccopharyngeal membrane. Buccopharyngeal membrane is not given in your syllabus. फिर भी आप इसको याद रख सकते हो बेटा. Okay, चलो. So now, in amphibians, heart is how many chambered? How many chambered heart you are going to see in amphibians? Again, very easy question. The whole think and answer. I have to choose an answer or you have written this much number of chambered? आपका आंसर जो 3 है वो 3 ऑप्शन है या 3 chambered heart है, बता रहे हैं आप? Okay. B. Okay, got it, got it, got it. Clear. So please make sure that you answer in the poll also. पोल में भी आप आंसर कर लीजिए बेटा. यहाँ पे हाँ, वेरी गुड. देर आर राजकोट, राजकोट वाले बच्चों. भावनगर. व्हाट अबाउट विशाल? आर यू चूजिंग योर आंसर इन द पोल? अरे राजकोट लेफ्ट क्या? ऑल राइट. So I'm ending the poll now because the whole has given answer both in the chat box and in the poll, I guess. So in amphibians, heart is how many chambered? It is 3 chambered. Okay, it is 3 chambered. It has 2 auricles. Okay, it has 2
Okay. Oh my God, something happened. Just give me a second. Two auricles and one ventricle. Okay, you might see here in the next slide, solution slide, amphibians have very low metabolism. Therefore, the oxygen demand is also less. क्योंकि बेटा जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उतना ही ऑक्सीजन का डिमांड होता है. When the metabolic rate is less, then the oxygen demand is also less. Okay, so less oxygen means what? Putting less demand on the heart to deliver the oxygenated blood. अगर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत ही नहीं है तो इतना काम ही नहीं लगता ना हार्ट को कि पंप करे, हाँ भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी तक फैलाए. ठीक है, तो बहुत जरूरत कम है. सो हार्ट का भी डिमांड जो काम करता है वो भी थोड़ा लेस है. ओके, सो द थ्री चेम्बर्ड हार्ट इज आइडियल फॉर द एम्फीबियंस. उनके लिए थ्री चेम्बर्ड हार्ट इज perfectly ideal. They also get oxygen from their moist skin, as I have told you. कि गिल्स से भी रेस्पायर करते हैं, स्किन से करते हैं. ठीक है, then lungs and then also the buccopharyngeal membrane. Okay, so they need less amount of oxygen and that is getting required. वो पूरी fulfill हो रही है with the three chambered heart. Okay, so answer for this question is B. Okay, चलो. Which of the following is a poisonous snake? Which one do you think is a very much poisonous snake? Poisonous snake. I don't understand. In Zoom, students have logged in. Okay, but they have not connected to audio. उनका सिर्फ यहाँ पे नाम दिखता है. I don't know if they are listening to my class or not. देखो बेटा, सिर्फ दिखाने के लिए क्लास में मत आओ. Connect to audio. What I am saying, please listen to that. Okay, great. So I'm going to launch the poll now. Please make sure that you answer in the poll. We're talking about poisonous snake. Naja, cobra, bangarus, crate, viper, or all of these. Okay. All right. One person has chosen the answer in the poll. What about others? What about others? Okay. So I'm ending the poll then. I have ended the poll. I hope that only one person has chosen. I want others to also, be active in the poll. So here you are seeing which of the following is a poisonous snake. Okay. Cobra is poisonous. Bangarus is the highest poisonous. ये सबसे ज्यादा highly poisonous है ये, highest poisonous. अगर एक बार इसने काट लिया तो बचना नामुमकिन है. ठीक है, then viper, all these are poisonous ones. यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ description. Venomous snakes belong to the reptilia, we know that. Okay, that have the ability of producing venom. Okay, venom is nothing but it is a liquid which is a poisonous liquid. Okay, for that we are using the word venom here, which is used for killing their prey. ठीक है, वो जिसको मारना चाहते हैं उनको ये कैसे यूज करते हैं, वेनम का यूज करते हैं ताकि वो ऑपोजिट वाला जो प्रे है वो मर जाए. ओके, एक तो है क्या कहते हैं प्रे को मारने के लिए एंड फॉर द डिफेंस. ओके, आप कहीं पे रास्ते पे चलते जा रहे हो, आपको सडनली पता नहीं चला वहां पे स्नेक है और यू हैव स्टेप्ड ऑन इट, आप उसके ऊपर स्टेप कर दिए तो वो डर जाएगा और आपको कुछ बोल के काटेगा. ठीक है, फॉर द डिफेंस एंड असिस्ट द डाइजेशन ऑफ देयर प्रे. से इतना सब कुछ जरूरत है स्नेक को जिसमें वेनम इतना काम कर रहा है. ठीक है, सो द डिलीवरी ऑफ वेनम इज थ्रू इंजेक्शन यूजिंग हॉलो और ग्रूव्ड फैंग्स. ठीक है, अब मैं बताऊं ना, अगर उसका सर ऐसा है तो इसके पास दो ऐसे फैंग्स होंगे. आई नो आई हैव ड्रॉन वेरी बैडली बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू. ओके, टू फैंग्स विल बी देयर एंड दोस टू फैंग्स आर हेल्पफुल इन बाइटिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेनम. ठीक है, दो फैंग्स होते हैं बेटा. फैंग्स मट हर्ड. अपने वैम्पायर्स की अगर कोई मूवी देखी है तो वहां पे देखोगे फैंग्स आते हैं दो. ठीक है, यहाँ पे दो दांतों के बीच में फैंग्स जैसे शार्प टीथ आते हैं. ड्रैकुला वैम्पायर तो वो क्या करते हैं, ऐसे गर्दन पे ऐसे चापते हैं, मतलब ऐसे उसको बाइट करके then they transfer all the venom. Okay, so that is how. वो तो I don't know. You might be wondering vampires are real, but those are fictional creatures. I don't know. पुराने जमाने में शायद थे होंगे क्योंकि खून पीने वाले लोग, किसको पता. ठीक है, but here venom, these snakes, these are real. Okay, so of many kinds of snake found in our country, that is we are talking about India. Okay, हमारे इंडिया में आपको ये चार मिल जाएंगे. 4 types of snakes are poisonous. One is cobra, cryot and viper.
ठीक है, वाइपर में मैंने यहाँ पे दिखाया है रसल वाइपर एंड अफाई। ओके, ये दोनों ही वाइपर्स हैं, रसल्स एंड सॉ स्केल्ड वाइपर दोनों ही वाइपर्स हैं। कोबरा एंड क्राइट तो हमने देख लिया। सो ये सारे ही आपके ऑप्शन में दिए हैं। ऑल ऑफ दीज आर गिवन इन योर आंसर, सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड द होल। ठीक है बेटा, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट, so identify the figures A, B and C, choose the correct option. You have to look into the diagram and then choose your answer. Okay, so I'll give you some time so that you look into the diagrams and choose your answer, then I'll launch the poll. Yes, Rajkot, I'm very happy that you answered, but your answer is wrong. Abhi correct hai Rajkot. Now you have answered it correctly. Okay, so very nice, very nice. All right. So here I am going to launch the poll. छोड़ो बेटा क्या poll launch करें, टाइम बहुत कम है, हम लोग ऐसे सॉल्व करते जाएंगे. So here we will be seeing this is a Ascaris. We know, okay, Ascaris है, belong to Aschelminthus. But आपके डायग्राम, आपके जो एनसीईआरटी है में उसमें दो डायग्राम्स दिए हैं. एक ऐसा है, okay, which has a long slender body that represents female. और एक होता है मेल जिसके पास कुछ ऐसा हुक होता है. ठीक है, something like this. A hook will be there. Like this, and male will be smaller. Okay, male छोटा होता है, इसके सर यहाँ पे hook होता है, but here in the female it is comparatively longer and it doesn't have hook. ठीक है, so this is female and this is male. Okay, we are talking about Ascaris. This is Ascaris, which belongs to Aschelminthus. Okay, so what is this then? This is Nereis. ठीक है बेटा, ये Nereis है और ये Hirudinaria है, leech है ये. Okay, this is leech. Now let us see which one is the correct option. Male Ascaris, no, they have shown female. Male को हटा दो. Okay, then female Ascaris, okay. B is Nereis and C is Hirudinaria. So B is the answer, C is wrong. Okay, C भी आंसर नहीं है हमारा, B आंसर है. ठीक है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चंस है. This is given in your NCERT. आप अगर NCERT देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा. देखो यहाँ पे मेल एंड फीमेल, right? So this much you need to do. चलो, very good, very good. We are moving ahead then. Refer the figures A, B, C, D given below. Okay, here I have shown you the figures again. Same figures. Which of the following option shows the correct name of the animals shown by the figures A, B, C, D? I'm launching the poll for this question. Very good, Rajkot. You are the first one to answer in the chat box, and your answer is correct actually. I have launched the MCQ poll. Please make sure that you answer in the poll. Okay, very good. One person has chosen. See, I told you, right? I had told you to read and come the NCERT. Okay, जिन बच्चों ने डायग्राम्स को अच्छे से देख लिया है, जिन बच्चों ने पढ़ के आए हैं, उनके लिए एकदम एज अ केक ऑफ पीस होगा. पीस ऑफ केक, केक ऑफ पीस, पीस ऑफ केक. ओके, इट्स एन इडियम. चलो, तो एक ही बच्चे ने आंसर किया, तो बाकी लोगों ने पढ़ के नहीं आए फिर, बाकी लोग पढ़ के नहीं आए फिर. All right. So here, if you open, okay, if you open the page number 53 in the phylum Arthropoda. In the phylum Arthropoda, you will be seeing all these beautiful creatures. देखा यहाँ पे, all these beautiful creatures. ठीक है, ये कौन है? Who are these? These belong to Arthropoda. And here, let's see one by one organism. This is locust. Okay, ये है बेटा locust. Okay, this is scorpion. Okay, scorpion तो सबको ही पता होगा. Okay, this is scorpion and this is prawns. This is prawn and this is snail. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो ऑप्शन में बटरफ्लाई तो यहाँ पे नहीं है, तो डी को हटा दो. लोकस्ट करेक्ट. बी इज स्कॉर्पियन करेक्ट, तो यहाँ पे बी को हटा दो. सी इज प्रॉन करेक्ट. पहला स्नेल, नो, ए इज रॉन्ग, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, refer the figures A, B and C. Choose the correct option which shows animals that regulate buoyancy with the help of air bladder. आपको यहाँ पे क्या देखना है बेटा? एग्जाम्पल्स देख के बताना है कौन से ऑर्गेनिज्म में
एयर ब्लैडर होगा विच हेल्प्स इन द बायोएनसी और फ्लोटिंग इन द वाटर. Floating in the water for buoyancy, which organisms have air bladders among these three pictures? इन तीनों में किसके पास है वो बताना है बेटा आपको. Take your time, take your time. Okay, I'm going to launch the poll now. अभी मैंने बहुत टाइम दे दिया. I'm going to launch the poll. Please make sure that it's used as answer in the poll. आप अगर एनसीईआरटी पढ़ के आए होगे देन यू विल बी वेरी इजीली आंसर इन दिस क्वेश्चन. नो, जिस किसी ने भी पोल में आंसर चूज किया है, ओके, 1% इज करेक्ट, 1% इज रॉन्ग. ओके, राजकोट इज करेक्ट देन. राजकोट का आंसर करेक्ट है. ओके, ओके, देन आई एंड द पोल. ठीक है बेटा, फिर मैं एंड कर देती हूँ पोल. सिर्फ 2 लोग ही आंसर कर रहे हैं बार बार, क्या जरूरत है इस पोल की. देन हटा दो इसको. ओके, चलो. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये सैलामेंड्रा है. ओके, दिस इज सैलामेंड्रा विच इज एम्फीबियन. ओके, ये है बेटा एम्फीबियन. ओके, दिस इज एम्फीबियन. एम्फीबियन को क्या जरूरत है एयर ब्लैडर की, है ना. तो जब उसको जरूरत लगेगी पानी में जाएगा, जब उसको जरूरत नहीं है वो टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा. अब ये दोनों देखो, दिस सी हॉर्स एंड दिस फिश. ओके, दिस इज काटला. ये काटला है. ओके, एंड दिस इज हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स. चलो, तो इनका क्या है बेटा, ये तो पानी में ही रहने वाले हैं. सो दे नीड एयर ब्लैडर्स. ठीक है, इनको एयर ब्लैडर्स की सख्त सख्त जरूरत है. ओके, सख्त सख्त जरूरत है. एंड दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बायोएनसी. एंड दे बिलोंग टू विच क्लास? Okay, so these two fishes, they belong to this class. Okay, Osteichthyes. तो यहाँ पे A and B are the ones which have buoyancy, which shows buoyancy and they have air bladder. तो C को तो हमने हटा दिया, तो जहां पे भी C है उसको कैंसल आउट कर दो. सैलामेंड्रा है वो. ठीक है, तो A B is the correct answer here. All of these भी wrong हो जाएगा. ठीक है, all of these will be wrong. A is the correct option here. ठीक है, so these two have hippocampus and cartla have the air bladder for buoyancy. Now, which of the following statements is or correct for class amphibian? You have to choose the correct one here. ठीक है, correct statement को choose करके you have to opt your option. Okay, so beta I will be giving you some time to read the question because थोड़ा statements long है. Then I will launch the poll. I'll give some time. Okay. ठीक है, I hope you have read your options. Now you are ready to choose the option here. ठीक है, स्टेटमेंट्स को आपने पढ़ लिया. नाउ आई वांट यू टू चूज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. जिस किसी ने भी पोल में आंसर किया है, यू आर करेक्ट. आई वांट अदर्स टू आल्सो आंसर इन द पोल. ओके, ग्रेट. आई थिंक राजकोट हैज डन दिस. वी आर गोइंग टू एंड द पोल. चलो बेटा, हम लोग एंड कर लेते हैं पोल. वेरी गुड राजकोट. सो हियर यू विल बी सीइंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट फॉर क्लास एम्फीबिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. यस, दिस इज ट्रू. ठीक है, बॉडी डिविजिबल है हेड एंड ट्रंक से. ओके, देन रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स ओनली. नो, जस्ट नाउ वी सॉ इट. इट रिक्वायर्स स्किन. स्किन से रेस्पायर करते हैं, लंग से करते हैं, गिल्स, देन buccopharyngeal membrane. So 2 is the wrong statement. Then heart is 2-chambered. Definitely not. Just now we saw in amphibians they have 3-chambered heart, right? 2 auricles and 1 ventricle. This is also wrong. Fertilization is internal. No, fertilization is external in amphibians. So 4 option is also, 4 statement is also wrong. So only one statement. Okay, first statement is correct. Here let's see the options. So A is the answer for this question. Only one is correct. All these are wrong options.
ठीक है बेटा, दिस वर द कैरेक्टर्स और द स्टेटमेंट्स ऑफ एम्फीबिया। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is an incorrect statement regarding flatworms. You have to choose incorrect statement here regarding flatworms. Platyhelminthes. Platyhelminthes की characters याद करो बेटा दिमाग में. Remember, try to remember the characters of Platyhelminthes. See, if you don't, remember the phylum के characters, remember by example. एग्जाम्पल के इससे याद रखो आप, ठीक है? प्लैटीहेल्मिन्थस में कौन आएगा? आपका टेपवर्म आ जाएगा, ठीक है? टेपवर्म आएगा, तो आप टेपवर्म को याद रखो. ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेपवर्म? आर दे एसिलोमेट्स और दे सीलोमेट्स? दे हैव विच टाइप ऑफ सिमेट्री? उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं? व्हाट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम? तो आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको आंसर इजिली कवर अप हो जाएंगी. Clear? So here, okay, no, Rajkot, your answer is wrong. Your answer is wrong. Think, think, think once again and then answer in the poll. और एक बार सोचो बेटा. Think. No, whoever has choosing the answer is wrong. I am ending the poll. बेटा ये लोग शायद ये इसको कोई भी सही से आंसर नहीं कर रहा. Okay, you can do one thing. You can open your NCERT for the platyhelminthes. Flatworms का आप open कर लो बेटा. ओपन करके वहां पे देखते जाओ क्या कैरेक्टर्स लिखे हैं. ठीक है? सो एसिलोमेट्स आर डेफिनेटली ट्रू. ओके, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर, अनदर मैसेज, correct. Now Rajkot is correct. Okay, they are acylomates. Yeah, definitely. Okay, definitely they are acylomates. It doesn't have any empty cavity. Okay, coelom nahi hai. Then they are bilaterally symmetrical. Yes, when you cut them through the sagittal plane, you will get two sides. One is left side and another one is right side. Okay, ये भी true है. This is also true. They lack digestive system. Yes, दे लैक डाइजेस्टिव सिस्टम. इनके पास पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब ये कहाँ से फूड को एंटर करा रहे हैं, वहीं से एग्जिट भी करा रहे हैं. दिस इज इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, दिस इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है? सो दे लैक डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, दे डू लैक. दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. नो, दे डोंट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. दे डोंट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये आपको यहाँ पे चूज किसको करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था. सो योर आंसर इज डी. Okay, they do not have circulatory system. They are acylomates. They are bilaterally symmetrical. They lack digestive system. They have circulatory system. तो वो last one वाला wrong है. They don't have. ठीक है? तो यहाँ पे देख लो. Sponges, cnidarians, flatworms and ctenophorans, they do not have circulatory system. इन लोगों के पास circulatory system नहीं है. ठीक है? Flatworms के आगे आप आते जाओ, वहां पे आपको circulatory system मिलेगा. Okay, flatworms के आगे. Clear? चलो. So there's another question on the screen. Which of the following statements from 1 to 5 are incorrect? Okay, you have to choose incorrect statement here. You have to choose incorrect statement. I will read the statements for you. Parapodia or lateral appendages in arthropods used for swimming. Radula in mollusks are structures involving excretion. Adults show radial symmetry. Ctenophorans are diploblastic. Okay, so you have to choose which is the answer here. I'm giving you some time. Please make sure. Very good, Rajkot. Your answer is correct. आपका आंसर सही है बेटा. All right. What about others? What about Dahod, Bhavnagar, Pragna? What about you guys? Okay, if you are not confident enough, I'll launch the poll. आप अपना जो guess करे हो ना, उसको आप poll में choose कर लो. If you are not confident enough to write in the chat box, you can choose your answer or opt your answer in the poll. Okay.
All right. So I'm getting the answers here. One person has chosen correct, another person has chosen wrong. तो यहाँ पे देखते हैं बेटा. So parapodoa, where have you seen the parapodoa बेटा? Parapodoa बेटा आपने देखा था Annelida में, which is in the case of Nereis. है ना, नीरिस में आपने देखा था अनेलिडा. बट व्हाट इट इज शोइंग आर्थ्रोपोडा. नो, इट इज नॉट सीन इन आर्थ्रोपोडा, इट इज सीन इन अनेलिडा. ओके, अनेलिडा में आपको मिलेगा okay parapodoa, which are the lateral appendages that is used for swimming. Okay, this is a nereis, ये nereis का है. So this is wrong statement, incorrect statement है. Radula in mollusks are structures involved in excretion are totally wrong. ओके, आई हैड टोल्ड यू यस्टरडे, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो रैडुला के ऊपर ही था. ठीक है, दे हैव अ फाइल ऑफ यू नो दैट, ये क्या कहते हैं बेटा, वो फाइल लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया था फॉर द रास्पिंग पर्पस. ठीक है, सब ग्राइंडिंग करने के लिए, ग्रीन करने के लिए, चबाने के लिए. जैसे हम लोगों के पास टीथ है, वैसे मोलस्क के पास रैडुला होते हैं. दे लुक लाइक यू नो ब्लेड, ब्लेड जितने शार्प होते हैं वो. ठीक है, सो दे आर हेल्पफुल इन द चीविंग एंड ग्राइंडिंग. ओके, बट एक्सक्रीशन में तो बिल्कुल नहीं. ओके, एक्सक्रीशन का उनका काम नहीं है, रैडुला का चीविंग का काम है. एस्कल मेंथस आर डायोशियस. यस, एस्कल मेंथस इज डायोशियस. ओके, आपने देखा अभी अभी बेटा, हमने देखा एस्कल मेंथस को. ओके, डायोशियस का मतलब क्या है, फीमेल इज डिफरेंट एंड मेल इज डिफरेंट. या दैट इज ट्रू. अभी हमने देखा ना बेटा, फीमेल का बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ी होती है एस्कैरिस. मेल वाला बहुत छोटा है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हुक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. देन अकाइनोडर्म अडल्ट्स शो रेडियल सिमेट्री. देखो बेटा, ये अकाइनोडर्म इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन. ठीक है, ये थोड़ा काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना पड़ता है. ठीक है, यूजुअली यूजुअली आप जब भी सिमेट्री की बात करते हो, आप जब भी सिमेट्री की बात करते हो, बाइलैटरल सिमेट्री. ओके, सो बाइलैटरल सिमेट्री कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? बाइलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है ओके प्लाटी हेलमिंथस. ओके, प्लाटी हेलमिंथस से कॉर्डेटा तक. ओके, से कॉर्डेटा तक. सो प्लैटिहेलमिन्थस से कॉर्डेटा तक सारे ही बाइलैटरल सिमेट्री शो करती हैं. देन रेडियल सिमेट्री किनके पास है? रेडियल सिमेट्री इज शोन बाय टू सिस्टर्स. ओके, सीलेंटरेटा. ओके, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. ओके, इन दोनों के पास होती है. बट देर इज एन एक्सेप्शन बेटा. सो दैट एक्सेप्शन इज एकाइनोडर्मा. जो अडल्ट एकाइनोडर्मा है वो रेडियल सिमेट्री शो करती है. ठीक है, अडल्ट एकाइनोडर्मा शो द रेडियल सिमेट्री. ठीक है, यहाँ पे अडल्ट एकाइनोडर्मा. ओके, अडल्ट एकाइनोडर्मा शोज रेडियल सिमेट्री. वेरएज यहाँ पे लार्वे, ओके, लार्वे ऑफ एकाइनोडर्मा डर्माटा शोज द बाइलैटरल. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है बेटा. दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन. ये कई बार पूछा है, दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. ठीक है, सो हियर इज इट करेक्ट? एकाइनोडर्मा अडल्ट शोज रेडियल सिमेट्री. यस, दिस इज करेक्ट. देन टीनोफोरन्स आर डिप्लोब्लास्टिक. यस, दे आर डिप्लोब्लास्टिक्स. तो कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट हैं? 2, 1 एंड 2. सो लेट अस लुक इनटू हियर. तो ऑप्शन ये वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. सारे ही गलत हैं. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन 11. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फाइलम एकाइनोडर्माटा. ठीक है, अभी मैंने किया, आपने अटेंटिवली सुना या नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला है. ठीक है, इन फाइलम एकाइनोडर्माटा द अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर डैश एंड द लार्वे आर डैश. पकड़ के मारूंगी भी मैं जेएनवी राजकोट को. अभी बताया मैं, अभी बताई. स्टिल यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. Adult echinoderm shows which type of symmetry and larvae echinoderm shows which type of symmetry? राजकोट, you need to change your answer बेटा, वो गलत आंसर है, आपने गलत ऑप्शन चूज किया है. ओके, अब मैं पोल लॉन्च करूंगी, अब पोल में आंसर कर देना. आंसर इन द पोल देन. Okay, I have launched the poll. I have launched the poll. Just now I told you, beta. Just now I told you. Okay, correct. Some people have chosen correct answer in the poll. I'm happy to see that. चलो, I'll end the poll then. ठीक है, मैं पोल को एंड कर लेती हूँ अभी. ओके,
तो क्या बताया था बेटा मैंने यहाँ पे, देखो मैंने क्या बताया। आई विल गो टू द लास्ट स्लाइड। देखो देखो यहाँ पे दो टाइप की मेन सिमेट्री होती है। वन इज रेडियल सिमेट्री, अनदर इज बाइलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिक है वो पॉरीफेरेंस को छोड़ दो, ठीक है। जो रेडियल में आपको कौन देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। बाइलैटरल में प्लैटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेटा तक सारे बाइलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ओके। अकाइनोडर्माटा एक्चुअली बाइलैटरल में आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये जो अडल्ट अकाइनोडर्मा दिखाता है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, वेराज लार्वे ऑफ अकाइनोडर्माटा शोज बाइलैटरल। ओके, लार्वे बाइलैटरल दिखाता है, अडल्ट अकाइनोडर्माटा रेडियल दिखाता है, ठीक है। वेरी गुड राजकोट। सो हियर अडल्ट अकाइनोडर्म्स, ओके, अडल्ट अकाइनोडर्म्स शो विच वन, दे शो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री लिख दो, यहाँ पे बाइलैटरल सिमेट्री। सो विच वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? A is correct option here. A is correct option. Okay. So we'll move to the next question then. So I will give you some time to solve this question. After 40 seconds, I will launch the poll. Okay. So make sure that you answer here. Yes. Have you chosen your answer? Okay. I'm launching the poll now. Please make sure that you choose your answer in the poll. बहुत easy है बेटा. Yesterday also we talked about some. जितना हम लोगों ने कल डिस्कस किया, अगर उतना ही आपको याद है तो भी आप आंसर कर सकते हो इसका. Yesterday we discussed. Very good for those people who has chosen. पोल में जिसने भी आंसर किया है बेटा, यू आर करेक्ट. Okay, I'll end the poll then. I don't have enough time to wait for poll answers. Okay, I think that is Rajkot, I guess. Okay, okay, कोई बात नहीं. All right. Yes, this is Rajkot. All right. So porifera. Okay, porifera में आपको कौन देखने को मिलेंगे? You will be seeing choanocytes. Okay, choanocytes are the cell which are present to the inner side lining facing the spongiocele. Spongiocele को face करते हुए inside होते हैं lining में. Those are choanocytes. Okay. So mollusks have radula. ठीक है. Just now I told they will be used in the grinding and chewing purpose. ठीक है. Mouth में होते हैं जैसे हमारे दांत हैं, वैसे mollusk के radula होते हैं. Very sharp. Okay, like blade. बहुत sharp होते हैं. Okay. तो टीनोफोरा, बेटा हम लोगों ने टीनोफोरा का क्या देखा था? वी हैड सीन द कूम प्लेट्स. कितने कूम प्लेट्स थे? 8 नंबर ऑफ कूम प्लेट्स विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन. ये याद है आपको, कल पढ़ा था. तो एम्फीबिया में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? क्लोएका. ओके, क्लोएका इज अ स्ट्रक्चर विच विल बी सीइंग इन एम्फीबियन, एम्फीबियंस. चलो, मेमेलिया विल बी मेमेरी ग्लैंड्स. ओके, मेमेरिया मेमेली ग्लैंड्स. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है. पोरिफेरा इज 3. अच्छा, तो बी को हटा दो. मोलस्का इज 4. ओके, मोलस्का इज 4, तो डी को हटा दो. टीनोफोरा इज 5. टीनोफोरा इज 5. ओके, तो सी को हटा दो. सो ये वुड बी द आंसर. टीनोफोरा 5 है. एम्फीबिया, ओके, एम्फीबिया क्लोएका, मेमेलिया 1. So A is the answer for this question. Very good. All right, so there's the next question on the screen. Examine the figures A, B, and C, and in which one of the 4 options all the items A, B, C correctly आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. तो ये बेटा एकदम डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है. मैंने बताया है आपको एम्फीबियंस में, और नॉट जस्ट दीज एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, आपको डायग्राम्स पे बहुत ज्यादा वर्क करना है, एग्जाम्पल्स पे वर्क करना है, और कैरेक्टर्स पे. एनिमल किंगडम में मुझे पता है आप कहाँ पे गिरते हो. एक तो गिरते हो कैरेक्टर्स में, दूसरा गिरते हो आप एग्जाम्पल्स में. ओके, तो फिगर्स याद रखो, डायग्राम्स याद रखो, चार्ट याद रखो, देन इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. ओके, चलो. सो हियर दिस इज साइकॉन. ओके, ये है ना बेटा, दिस इज साइकॉन. दीज आर बिलोंग्स टू पोरीफेरा. ये सारे पोरीफेरा को बिलोंग करते हैं. स्पॉन्जेस. ओके, दिस इज यू स्पॉन्जिया. दिस इज यू स्पॉन्जिया, एंड दिस इज स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म.
स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है, यूज स्पॉन्जिया एंड स्पॉन कैन बी सीन इन मेराइन कंडीशंस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो, आइडेंटिफाई द एनिमल्स शोन इन द गिवन फिगर्स ए बी सी फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, आपको उन ऑप्शंस में चूज करना है विच इज योर करेक्ट आंसर। यस, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। And meanwhile, I launch the poll. ठीक है, meanwhile I launch the poll. Please make sure that you answer in the poll. Very good, very good. For those people who had, opted their answer in the poll, you are correct. Okay then. Only one person has chosen their answer in the poll. What about others? चलो, आई हैव एंडेड द पोल। तो बेटा बहुत सिंपल है, मैंने बताया ना, आपने अगर एनसीईआरटी के पिक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। ये जो फर्स्ट वाला है, दिस इज ऑल योर फेवरेट, आपका फेवरेट ऑक्टोपस है। मुझे पता है आपको ऑक्टोपस से बहुत प्यार है। ठीक है, क्योंकि एक पैर नहीं है ना इसके, बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। चलो, तो दिस बी इज एस्टेरियस। ओके, एंड दिस इज यूफियोरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, नो नो नो। अच्छा, ये तो बहुत इजी था, है ना, बहुत इजी था। ए इज द आंसर फॉर दिस। चलो, अब थोड़ा डिफिकल्ट पे आते हैं। नाउ लेट्स कम टू सम डिफिकल्ट क्वेश्चन। कॉलम वन कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड द कॉलम टू कंटेन्स द फंक्शन और लोकेशन। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब तक मैंने इजी दिया, अब थोड़ा मैंने दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको भी क्रैक कर लोगे, आई नो। ठीक है, take some time, look into the options and then let's try to answer. Take some time. Read all the column 2 options first. Okay, column 2 के options आप पढ़ लो बेटा, then column 1 के options पढ़ लो। ठीक है, very good Rajkot, you are correct. चलो, ऑल राइट, सो आई नॉट लॉन्च द पोल, क्योंकि दो तीन ही बच्चे हैं तो इसलिए मैं पोल नहीं लॉन्च करूंगी। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम। ओके, वाटर कैनाल सिस्टम आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, दैट बिलोंग्स टू स्पॉन्जेस। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम बेटा आप कहाँ पे याद रखोगे? स्पॉन्जेस में याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्जेस, ए इज वन। तो और एक आपको मिलता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कैन एनीबडी टेल मी वेयर डू यू फाइंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम? Don't get confused between water canal system and water vascular system. Okay, vascular system कौन से आप देखोगे बेटा phylum में? In which phylum you will be seeing water vascular system? Don't get confused. आपके एनिमल किंगडम में दो टाइप के सिस्टम्स हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम इज सीन इन पोरिफेरा स्पॉन्जेस। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज सीन इन, yes, nobody is saying anything, एकाइनोडर्माटा। ओके, आप एकाइनोडर्माटा में देखोगे बेटा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वो आपको याद रखना है। देन कूम प्लेट्स, आप कूम प्लेट्स कहाँ पे देखोगे? टीनोफोरा। वेयर इज टीनोफोरा? हाँ, लास्ट में है, देखो, 8 ciliated external rows present in the body of Ctenophora. Okay, तो दिस इज करेक्ट वन। नेफ्रीडिया इज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, है ना, तो नेफ्रीडिया का क्या ऑप्शन दिया है यहाँ पे? हाँ, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, तो ये नेफ्रीडिया हो गया। चलो, देन जॉइंट अपेंडेजेस। सो जॉइंट अपेंडेजेस क्या होगा बेटा? यू नो दिस बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। ठीक है, वेर एवर यू कम अक्रॉस वर्ड जॉइंट अपेंडेजेस, दैट मीन्स दिस इज अ बॉडी पार्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो मस्कुलर फूट आप कहाँ पे देखोगे? इन द मोलस्क्स। इन द मोलस्क यू विल बी सीइंग द मस्कुलर फूट। सो नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस। तो ए इज वन। अरे बाप रे, ये तो एकदम डायरेक्ट है ना, ये एकदम डायरेक्ट है, ए करेक्ट है, बट लेट अस वेरीफाई अदर्स। बी इज 9, complete 9, okay, 9 is correct. C 8, nephridia, okay. D 5,
B5 करेक्ट. ओके, सो ए इज द ऑप्शन बेटा, ये इसका ऑप्शन है. ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ the figure given below is the characteristic structure of the phylum in which animals are aquatic, free living or sessile, mostly marine. Radial symmetry identify the phylum and correct function. आपको बेटा phylum choose करना है and you have to choose the correct function given with the phylum. Okay, phylum and function. Yes. Take some time, read all the options. Very good, Rajkot. Very nice. Okay. So यहाँ पे देखो बेटा, let us look into the options. Ctenophora. Okay, Ctenophora emit lights. No, definitely not. ये wrong है, और ये डायग्राम्स के तो बिल्कुल खिलाफ है. देखो ये डायग्राम किसका है बेटा? दिस इज निमैटोसिस्ट और नीडोब्लास्ट. ठीक है, ये नाइडेरियन है. दिस इज नाइडेरियन. दिस इज बिलोंग्स टू नाइडेरिया. ओके, ये नाइडेरिया है, तो आप सारों को हटा सकते हो. ठीक है, पॉलीफेरा तो बिल्कुल नहीं है, मोलस्क भी बिल्कुल नहीं है. ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? आई थिंक इट गॉट zoomed. एक मिनट. अरे यार. ओके, सो यहाँ पे देख लो नाइडेरियन. तो ये नाइडेरियन इज द करेक्ट आंसर हियर. मोलस्क भी रॉन्ग है. ठीक है, अभी आपको क्या देखना है? फाइलम नाइडेरिया तो आपने चूज कर लिया. लुक इनटू द फंक्शन. एंकोरेज, डिफेंस एंड फूड कैप्चरिंग, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. ठीक है, सो देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन हियर. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है. करंट, वाटर करंट फ्लो इन स्पॉन्जेस. ठीक है, जो फ्लो होगा वाटर करंट का स्पॉन्जेस में कैसे होता है? यू हैव टू चूज हियर. Flow of the water current in sponges, porifera. वेरी गुड राजकोट. तो पहले बेटा मैंने आपको इसका डायग्राम भी बताया था, इसका मैंने डायग्राम भी बताया था. ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं. कंसिडर दिस इज एन स्पॉन्ज. तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ओके, वी कॉल देम एज ऑस्टिया. ठीक है, तो सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जोसील. ठीक है, एंड दिस इज ऑस्क्यूलम. ठीक है, ये होता है ऑस्क्यूलम. तो वाटर ऑस्टिया से अंदर जाएगा, स्पॉन्जोसील के अंदर थोड़े टाइम तक रहेगा, देन ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा. ठीक है, सो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स और एल्स यू कैन लीव. Okay, thank you for attending the class. In the next weekend, I am going to solve morphology of flowering plants. ठीक है, अभी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो. अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो. ठीक है, great. So thank you everyone for attending the class.